Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online, and I am Dr. Asad, and in this lecture we will be discussing another set of common viral diseases that should be known to the grade 11 students, so you will be able to understand their etiological factors, their clinical features and their treatment. By the end of this lecture, you will be able to understand the causative factors of herpes simplex virus, how it is caused, what sort of symptoms you will be able to observe in such patients, and how you can manage this viral infection. And also we will cover a very common viral infection known as the influenza. We will discuss the type of virus involved in it, and we will also cover how we can manage this infection. Starting off with herpes simplex, so this is caused by a double-stranded DNA virus that is covered in an envelope known as the tegument, and symptoms that you mostly come across once the herpes simplex virus is active in an individual are some sort of vascular lesions in the mouth, on the lip, and it can also be found on other parts of the body wherever obviously the skin is located. इसके ऊपर हमें herpes simplex जो है वो विजिबल नज़र आ सकता है in form of different vascular lesions. Obviously vascular lesions क्या होते हैं, बेसिकली हमारी जो blood vessels हैं उस किसी भी specific region को उसको affect करते हैं, जिसकी वजह से there is जो कि lesion जो appear होगा चाहे वो हमारी ओरल कैविटी में है या किसी भी दूसरी स्किन की सरफेस है, दैट हैज़ अ रेडिश अपीयरेंस. सो यू कैन सी ओवर हेयर द टाइप 1 herpes simplex, जो कि ऑब्वियसली ओरल कैविटी या लिप वाले रीजन में हमें ज़्यादातर नज़र आता है, एंड यू कैन सी दिस लीजन ओवर हेयर ऑन द सरफेस ऑफ द लिप. इसकी कंसिस्टेंसी जो है दैट कैन वेरी, तो इस तरह से लिप वाले रीजन की जो वेस्कुलरिटी है दैट इज़ अफेक्टेड बाय दिस वायरस, एंड दिस इज़ हाउ इट अपीयर्स. तो इसी तरह से इसकी अपीयरेंस होती है ऑन द ओरल म्यूकोजा विद इन द ओरल कैविटी. इसके अलावा डिफरेंट सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि फ़ीवर है, ऑब्वियसली रैश तो आपको नज़र आएंगे. इसके अलावा समटाइम्स लो ग्रेड फीवर कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन केस ऑफ दिस वायरस, एंड ऑब्वियसली यू कैन सी ओवर हेयर द एपिथेलियम of the ectodermal tissue is affected. The epithelial layer है, the ectoderm जो है that is the surface tissue of the skin, तो उसकी जो superficial जो layer होती है that is the epithelium that is affected. और ये जो virus है that can be either type 1 और type 2. type 1 obviously अभी जो हमने observe की है जो oral cavity के lesions होते हैं they are mostly considered in type 1, और उनका जो spread है that is through oral contact. इसके अलावा type 2 में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होती हैं, जेनिटल ऑर्गन्स, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व, उनके ऊपर जो है वो लीजन्स फॉर्मेशन हो जाती है, एंड दैट इज़ ऑब्वियसली थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. सो यू कैन ऑल्सो सी द इंक्यूबेशन पीरियड दैट इज़ रेंजिंग फ्राम 2 to 12 days. उसके बाद ऑब्वियसली जो वायरस है दैट कंप्लीट्स इस साइकिल, और उसके बाद अमूमन जो है इसके सिम्टम्स खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. इसके अलावा जो डिफरेंट ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं दैट आर द एसाइक्लोविर, दैट इज़ एन एंटीवायरल ड्रग दैट आर मोस्टली अप्लाइड टॉपिकली. ऑब्वियसली डिफरेंट क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में ये हमें मिलता है, तो वी कैन अप्लाई दैम ऑन द सरफेस ऑफ द लीजन्स, एंड प्रॉबली विद इन सम डेज और समटाइम्स इन वीक सच इन्फेक्शंस दे सबसाइड. इसके अलावा इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, वेरिसेला जोस्टर है, उसके केस में लीजन्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा जो वायरल इन्फेक्शन होती है दैट इज़ स्लाइटली मोर डेंजरस एज़ कम्पेयर टू द herpes simplex 1 and 2. Then we come to the influenza, that is the most common viral infection obviously that causes flu in different individuals. So the cause of this infection is the RNA enveloped virus, and obviously its occurrence is pandemic
इट इज़ वेरी कंटेजियस। ऑब्वियसली जब भी इस तरह की वायरल इन्फेक्शन होती हैं तो आपने देखा होगा कि एक ही करके जो सारे अफराद हैं दे गेट अफेक्टेड फ्राम इट। वाई? बिकॉज इट इज़ हाईली कंटेजियस। उसके अलावा जो डिफरेंट आपको सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, कफ, रनी नोज़, फीवर, फटीग एंड हेडेक। So these are the different symptoms that you observe in case of influenza. Obviously it is contagious, तो बहुत तेज़ी के साथ जो है ये किसी भी रीजन में और डिफरेंट रीजन में फैल सकती है। तो दैट इज़ वाई दिस influenza or common cold is considered to be a contagious or a pandemic viral infection. How we can manage influenza? तो यहाँ पे आप डिफरेंट पॉइंट्स देख सकते हैं कि ऑब्वियसली जब भी पेशेंट को फ्लू होता है तो उसके जो बॉडी के फ्लूइड्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है। सो वी कैन एडवाइज द पेशेंट टू बी ऑन हाई फ्लूइड इनटेक। और उसके अलावा जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, हेडेक है, फीवर है, उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। सो उसके अलावा एंटीवायरल थेरेपी या डिफरेंट एंटीवायरल ड्रग्स भी दिए जा सकते हैं इफ़ द सिम्टम्स आर मोर एडवर्स। इसके अलावा डिफरेंट जो वैक्सीनेशन हैं वो भी दी जाती हैं, ख़ास तौर पे जब डिफरेंट कंट्रीज़ में आप ट्रैवल करते हैं तो फ्लू शॉट के नाम से अक्सर जो ये कॉमन वैक्सीनेशन है वो दी जाती है टू अवॉइड सच कंटेजियस डिजीज़, ताकि जब भी आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका स्प्रेड जो है वो बहुत तेज़ी से होता है। सो अवॉइड सच स्प्रेड ऑफ वायरल इन्फेक्शन, द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन is given to the different patients. So this is the end of our video where we have discussed two very common viral infections and their symptoms. So do like our video and share it with other students of grade 11 so it can be helpful for them to understand these viral infections at their level of education. And do mention in the comment section if you have any question relevant to our video. Last but not the least, do not forget to subscribe to our channel and click the bell button so you can receive updated notification of our new videos on regular basis. Thank you very much.